हेलो एवरीवन, दिस इज कस्तूरी एंड यू आर वाचिंग एसएसटी बज़। जैसे कि आज का सेशन का नाम ही है द क्विक रिवीजन ऑन द पेनिनसुलर प्लेटो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इफेक्टिव रिवीजन एंड आई नो बाय एंड ऑफ द सेशन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट विद द पेनिनसुलर प्लेटो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। सो फर्स्ट इट इज गिवन मेड अप ऑफ ओल्ड crystalline, igneous and metamorphic rock. Okay, now igneous rock definitely when we are going to get volcanic eruption, and metamorphic rock when igneous rock and sedimentary rock get high temperature and high pressure, so it converts into metamorphic rock. और metamorphic rock का एक special characteristic है, it must be crystalline. Okay, now next we will go for division. Definitely it is divided by two. First one, the central highland, and the second, the Deccan Plateau. Okay, Central Highland lies on northern India from west to east, and Deccan Plateau definitely in southern India. Now we will go for the reason behind formation. ये पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है, the breaking and dipping of Gondwana land. Okay, now last we will go for the features, how the peninsular plateau look like. Now already we know, जब हम माउंटेनियन रीजन को ड्रॉ करते हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक हम बहुत ध्यान से याद रखते हैं, जो कि ना पीक मस्ट बी वेरी शार्प एंड ऑल्सो वैली वुड बी वेरी डीप. Isn't like that? Isn't? So peak very sharp and valley very deep valley. Now for the peninsular plateau that features should be completely opposite. वो कैसे हैं? देखो, yes. So here we are getting rounded hill. And the second one is very shallow valley. Shallow valley and spread over for the long, means much area, so broad. Okay, so these are the features of the peninsular plateau. Let's start with Central Highlands. So first we are going to put that shade, so that would be easier to understand exactly the location. Okay, so already drawn, so that shaded part is the Central Highlands. Okay, now we are going to locate that northern, that is Vindhya range. Okay, Vindhyan range, and northwest part, that is known as Aravalli range. Okay, so northwest Aravalli range and that southern portion surrounded by the Vindhyan range. So that is all about the location. Now division, the whole that Central Highlands we are going to make it into three division. The western part, ये जो western part है मालवा प्लेटो, then in between the middle part बुंदेलखंड and भागेलखंड. Bhagelkhand. Actually these are the locally these name are used, and the eastern extension part, that is known as
छोटा नागपुर. Okay, so these are the into the three division we have divided. Now we will get to know about rivers. So here Chambal, then Sindh, Betwa, even Ken. These rivers we can see to flow. Now कौन सा डायरेक्शन में वो फ्लो हो रहे हैं तो वो देखना है. हियर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एक्चुअली हाईलैंड, सो ऑल दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड फ्लो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इवन नॉर्थ ईस्टर्न के तरफ फ्लो हो रहे हैं. सो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, राइट. नाउ वी विल गो फॉर शेप. शेप में देखो दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज ब्रॉडर एंड जितना ईस्ट के तरफ जा रहे ग्रेजुअली इट्स नैरोअर. सो वी आर गोइंग टू राइट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इज ब्रॉडर एंड नॉर्थ ईस्ट नहीं, ओनली ईस्ट इफ यू आर राइटिंग दैट इज ऑल्सो ओके. ईस्टर्न पार्ट नैरोअर. ओके, चलो तो फिर लेट्स लर्न अबाउट द डेक्कन प्लेटो. पहले हम जानने से पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे, दैट वुड बी इजियर फॉर जस्ट पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इसे हम कर रहे हैं मार्क वेस्टर्न घाट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट ईस्टर्न साइड, this is Eastern Ghat, and now in between that portion I'm shading over here, that portion is known as Deccan Plateau. ओके, दैट मच क्लियर. एंड डेक्कन प्लेटो का लोकेशन कैसा देखेंगे, दिस इज नर्मदा रिवर. एक्चुअली द साउथ साइड ऑफ साउदर्न पोर्शन ऑफ नर्मदा रिवर दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेटो. सो साउथ साइड ऑफ नर्मदा, okay, that is the location. Now shape already we have drawn, so triangular shape, ठीक है. Now next Western Ghat and Eastern Ghat both are the part of Deccan Plateau, so that's why with the help of differentiate we are going to collect all this information, and for that these are the criterias. Look, type, height is peak, रिवर्स एंड सॉइल. सो इनके बारे में अगर सारे इंफॉर्मेशन इफ वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर दैट वुड बी क्लियर टू यू, ठीक है. सो वन बाय वन टाइप्स डेफिनेटली देखो, वंस एट ए इन सिंगल स्ट्रेच, सो दैट इज कंटिन्यूअस, एंड देयर आई हैव हियर gap is there, so that is discontinuous. Because so many rivers they flow from west to east side and fall on Bay of Bengal, so that's why discontinuous. Now height, definitely the Western Ghat height is more than Eastern Ghat, so that's why here we are going to write 900 to 1600 meter. For Eastern Ghat that height would be 600 to 900 meters, right. Now next highest peak देखो here Anaimudi and there Mahendragiri. So highest peak
Anaimudi and Mahendragiri. Done. Now rivers. Rivers already we have got to know कि Western Ghat higher than Eastern Ghat. So all the rivers originate from Western Ghat, flows towards eastern side and fall on Bay of Bengal. So most of the river originates from there, but again no such river. Okay, now next, soil quality. Definitely Western Ghat is more fertile than Eastern Ghat. So here we are going to write fertile soil and there not so fertile. Okay, so these are the information about Deccan Plateau, even Western Ghat. ठीक है, how was the session? I will love to know. If you have not subscribed, kindly subscribe my channel and share with your friends. Tata, bye bye.